Hi, good morning, students. Welcome to my YouTube channel. And we are in JavaScript programs video series where we are going to see some questions that may come for your online IT exam. All this question list you will find on this blog, that is scienceitnotes.blogspot.com. You can have a look over it, where you will find a summary of this lesson number 3, advanced JavaScript. And at the bottom, you will get the list of programs. Here it is. So in this video series, we are going to solve JS programs. Initially, we'll be taking some simple programs, and then later on, we'll move on to complex programs. So I'll be talking in Hindi and English. So आज का प्रोग्राम है ये वाला लेंगे हम. Write JavaScript code to check whether the number is odd or even. तो यहाँ पे आपको एक नंबर एंटर करना है JS प्रोग्राम थ्रू, और आपका प्रोग्राम का कोड पता करेगा कि वो नंबर ऑड है या इवन है. यानी इवन मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो हम उसे इवन नंबर बोलते हैं. इफ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, वी कॉल इट इज अ ऑड नंबर. ओके, सो लेट्स डू दिस. So I'll be starting with Notepad+. So this was our previous program, average of 3 numbers. What I'm going to do is I'm copying the structure of the program. Okay. So every time there is no need of typing the entire structure again. So our structure is ready. So it starts with the doc type tag. It is doc type HTML tag, which is a declaration tag, which tells the version of the HTML that you're going to use. Then your HTML web page begins with the HTML tag, which is the root element. It will also have a closing tag at the end. Then your HTML web page is divided into 2 sections, head section and body section. Under head section, we are just giving one title using the title tag. Okay, so our program is to find even or odd. So we'll say to find even or odd. So let me save this so that colors will come for the tags. So I'll give the name as JS program3.html. Okay, so I'm choosing the type hypertext. You can see this option append extension. So automatically .html will get added to this file name. So here we save it, and you can see the colors have changed. I'll zoom it for you. So let's begin with the program. We'll be using prompt function to input the value. Okay. So under JavaScript, the first thing is creation of variables. Okay. So let's start. We'll create one variable called num. That's all. That will hold the value of the number that you're going to enter. Then let's input the value in num. So write num is equal to prompt function input a number. Okay. Then we'll give a parseInt function to extract that integer from the prompt box, because by default prompt box will accept the values all in textual format. So that is the string format. So from that string format, you need to extract the number. So there are 2 functions available, parseInt and parsefloat. Parsefloat ये function से हम numbers with decimal point को extract कर सकते हैं, और parseInt से सिर्फ इंटीजर्स एक्सट्रैक्ट हो गए. ओके, सो इस तरह आपको ये लिखना ज़रूरी है. पार्सेंट नहीं लिखेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग बनेगा, तो उस पर एडिशन, कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन में नॉट वर्क प्रॉपर. ओके, तो ये हो गया आपका इनपुट. तो साथ ही साथ आप आउटपुट भी चेक कर लेना. एवरी टाइम वाइल वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट, आप जैसे ही स्टेटमेंट्स टाइप करते जाओगे उसी दौरान आप आउटपुट भी चेक करते रहना. तो देखो ये रन हो रहा है. So just entering the number 25. Okay, now there is no output on the screen because we have not given any document or try. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं. JS program
to input a number and find even or odd. So we are displaying the one message on the screen. So we'll put this in header tag. तो यहाँ पे हम अभी header tag h1 यूज़ करेंगे और फिर header tag को क्लोज करेंगे. यहाँ पे odd नंबर, odd जो वर्ड है उसके बाद तुरंत. Now let's calculate, let's find out whether the number is even or odd. Okay. तो देखो भाई मेथड, मैनुअल मेथड जो हम यूज़ करते हैं कि नंबर इवन और ऑड कैसे पता करते हैं. अगर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 तो वो इवन नंबर है, और नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो वो ऑड नंबर है. वेरी सिंपल. तो हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का जो 2 से इस नंबर को डिवाइड करेगा और आपको रिजल्ट देगा रिमाइंडर फॉर्म में. तो आपको नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. ओके. सो इन जावास्क्रिप्ट there are various arithmetic operators given. In standard 11th you must have learned what are the different operators available. तो उसमें एक ऑपरेटर है मॉड्यूलस, यानी परसेंटेज सिंबल जो है वो है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर. नाउ दिस ऑपरेटर when given between two values or two variables, it will always return you the remainder of the evaluation. दो एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूट रिजल्ट आएगा वो आएगा रिमाइंडर. तो यही ऑपरेटर हमें यूज़ करना है. ओके. सो आपको इस नंबर को मॉड्यूलस 2 करना है. ओके. तो इसका जो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर आएगा. अगर नंबर 2 से डिवाइडेड है तो इसका रिमाइंडर रहेगा 0. तो आपको वही चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं. अगर 0 आ रहा है तो आपको स्टेटमेंट में डालना है इट्स इवन नंबर, और 0 नहीं आ रहा है तो स्टेटमेंट में डालना है इट्स ऑड नंबर. ओके. So what we are going to do, we are going to put this expression num modulus 2 under if block. तो if ऐसा स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट में that is used for making decisions और चेंजिंग द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. तो हम चेक करेंगे इफ नम मॉड्यूलस 2. ओके. तो क्या डिस्प्ले होगा. तो यहाँ पे ब्रेस हम नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा, बट स्टिल आई विल बी यूजिंग ब्रेस बिकॉज वी आर जस्ट राइटिंग इन अ सिंगल लाइन आफ्टर इफ. ओके. सो इफ नम मॉड्यूलस 2 द आंसर इज 0 सपोज. सो यू शुड डिस्प्ले इट इज़ अ इवन नंबर. अगर 0 नहीं आया, एनी पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स इट्स ऑड नंबर. तो इफ कैसे चलता है, इफ को 0 मिला, 0 का मतलब होगा फॉल्स, तो वो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. इफ को ट्रू मिला यानी 1 या 1 से ज़्यादा वैल्यू मिली तो वो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे a number entered is odd. Okay, let's check out whether this is working. If num modulus 2, तो हम पहले से so we are entering 25, enter. तो देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ गया, नंबर एंटर्ड इज ऑड. फिर एक बार रिफ्रेश करते हैं हम F5 की से. Now we enter 24. So there is no output because we have not given the else block. तो हम यहाँ पे अभी else block लिखेंगे. else में लिखेंगे number entered is so it's not getting selected. Okay, let's select it using mouse. The number entered is even. Okay, so this is how we use the if block to find out whether the number is even or odd. So let's check this.
सो अभी हम 24 एंटर करेंगे तो आंसर आएगा नंबर एंटर्ड इज इवन. तो इफ यू एंटर 0 वैल्यू, सो व्हाट विल द रिजल्ट? जस्ट थिंक अबाउट इट. एंटर्ड इज इवन आएगा, करेक्ट. इफ यू एंटर अ नेगेटिव वैल्यू, say I'm entering -22, so again it will come number entered is even because -22 is also divisible by 2. तो इस तरह if ब्लॉक यूज करते हैं. ओके, तो if ब्लॉक में जो भी एक्सप्रेशन आप दोगे उसका रिजल्ट 0 नहीं तो नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए, नहीं तो कोई बूलियन वैल्यू ट्रू, नहीं तो फॉल्स. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नम को 2 से डिवाइड कर रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से, जो कि आउटपुट देने वाला है रिमाइंडर. तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो नॉन जीरो वैल्यू आएगा ऑलवेज. तो जो नंबर 2 से डिवाइडेड है उसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा, और जो 2 से डिवाइडेड नहीं है उसका आंसर नॉन जीरो, एनी वैल्यू 1, 2, 1 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द number we are inputting. So this is one way of finding whether the number is even or odd. So another way of writing this statement is there, so that also we'll see. तो ये प्रोग्राम आप एक वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. Okay, so here is your complete program that will display even or odd. So next, another way of writing. See what we are going to do. We will check out if num modulus 2 का आंसर 0 है तो ऐसे कंपेयर करेंगे. तो if we write num modulus 2 equal 0, then print the number is odd. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो odd वाला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे जाएगा और even वाला स्टेटमेंट ऊपर जाएगा. ये चेंजेस होंगे. ओके, तो देखो ये अभी एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन हुआ, ये चेक कर रहा है. तो नम मॉड्यूलस 2 का जो आंसर है वो 0 है कि नहीं. तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है आपको ट्रू या फॉल्स में आएगा. ट्रू आ गया मतलब इफ ब्लॉक गॉट एग्जीक्यूटेड, ये वाला. फॉल्स आंसर आया तो एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ राइटिंग. So that's all for today. Thank you very much. See you in the next JavaScript video.